नमस्ते सर। नमस्ते सर। Yeah. Yes, friends. Let us start the session. Requesting you all to sit with your spine erect, keeping your shoulders proper, your chin parallel to the floor, closed eyes. Just allow your whole body to settle down. Slowly inhale. Gently open your eyes. Yeah. First of all, I'm sorry for entering late. And now, friends, we are going ahead from where we left in the last class. The pranayama. Yes. So last class we had done the practice of Surya Bhedan. Now we are coming to yes. So we left. There are two issues that we had to address at the beginning of this class before moving on. One was one thing was pratiloma. Pratiloma, pratiloma and anuloma, they are not with any kind of difference in the meaning. अनुलोम को ही उन्होंने प्रतिलोम नाम दे दिया है. एक तो ये बात है. So he just calls anuloma viloma as the viloma shabda is like we have started inhaling through the left and exhaled through the right. Now that becomes anuloma. And when we say viloma, it is inhaling through the right and exhaling through the left. Okay. So he says pratiloma means what? When you inhale from one, you have to exhale from the other. And wherever you have exhaled, you have to inhale and exhale from the other. So that concept, he has put the name pratiloma there. In fact, I tried to speak one of very renowned teacher of Iyengar Yoga, and she is Rajvi Mehta, and she happens to be a good friend. And she is a very renowned teacher throughout the Indian scenario. And she told me, Sabir ji, kuch nahi, wahi hai, anulom vilomi hai, usme kuch alag se nahi hai. So I said ki in the book also we are not getting any kind of clarity or explanation. So she said ki sir used to call the practice by pratiloma. And that is the reason that the thing has been given there as pratiloma. But I said ki the explanation seems to be slightly different. So she said ki there is no difference as such. It is one and the same thing. Now you have also read the same thing. Have you come across any kind of difference in that? Exactly. That's why, one was wondering ki, then why the use of this terminology? So either there's some subtle difference which we are not unable to catch. Right? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आहार प्रत्याहार, तो प्रति प्लस आहार प्रत्याहार. तो आहार का मतलब होता है खाना लेना और प्रत्याहार का मतलब होता है उस खुराक को कहीं ना कहीं अवॉइड करना.
नहीं लेना, उसको स्टॉप करना। तो यहां पर उन्होंने प्रतिलोम को शायद उसी आधार पर ऐसे किया होगा कि जो लिया हुआ है उसी तरह से उसको बाहर की तरफ छोड़ दो, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया प्रतिलोम। जबकि टेक्निक के अंदर कोई फर्क नहीं है, नथिंग नथिंग, नो डिफरेंस इज देयर। हाँ, दूसरी और क्या बात थी हमारी? वो फिंगर पोजीशन कह रहे थे, ये जो मुद्रा के लिए, हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये फिंगर, ये सब चीज में मतलब कुछ कि व्हाट मे बी द रैशनल। मैंने अपना रैशनल दिया था कि दिस इज कनेक्टेड विद द वेरियस फिंगर्स सब्जेक्टिंग टू द पंच महाभूत। वैसे आशा मैडम ने जो शेयर की थी बात, वो ज्यादा पटी कि हम ऐसे कोई भी चीज के ऊपर ग्रिप रख सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसे रखते हैं तो वो पहली बात तो पकड़ में ही नहीं आते, और फिर दूसरी बात, जब हम यहां रखते हैं तो वी आर नॉट अननेसेसरीली अप्लाइंग ए काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द नॉस्ट्रिल विच गोज अहेड। और जहां लेफ्ट हैंड की बात है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कि आप जब राइट हैंड, आपके लिए कहा गया है कि आपको राइट हैंड यूज करना चाहिए, एंड विथ सम रीजन you find that your right hand is unable to be utilized, then automatically your left hand carries out the role of the right hand. So you can ideally use the left hand in that position to carry out the practice. हाँ, एक जरूर है कि अंगूठे से यहां हमारा राइट नॉस्ट्रिल बंद होता है और ये लास्ट टू फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होता है, but when you do the same thing with the other hand, it will be the other way. So how to understand the placement of the uh, tattva along with the Surya Nadi and the Chandra Nadi? तो यहाँ पर वो कितना मैटर करता है, that will be decided by the practice only. One who is doing the practice and experiencing the changes will be able to clarify. But as far as my thinking goes, once the left thing becomes the right, right in the sense not with the right hand, but with the essential thing to be done at that point of time, then automatically the structure in the body also changes according to that kind of requirement. तो अब जैसे कि कोई भी कह, हाँ, वो तो 1 in million yoga practitioners would not have a right hand, so that is not really applicable. हाँ, मोटा दोनों के दोनों हाथ होते हैं, हाँ, but there is, I mean, almost universal practice right hand से ही करते हैं. So there must be some major reason why the left hand is not recommended to be used. नहीं, it nowhere you will find that left hand is not recommended, but right hand recommendation has been given. Exactly. So वही बात है कि क्योंकि क्योंकि ग्रंथ बहुत कंसाइज में लिखे हैं, तो वो क्या चीज नहीं करनी है वो जाएंगे तो वो 10 times उसका लेंथ हो जाएगी, राइट? सो दे, एज यू योरसेल्फ हैव सेड, कि भाई उन्होंने केवल एसेंशियल्स दिए हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है वो अपने को या तो प्रैक्टिस से या से ही पता चलेगा. हाँ, तो जो जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वो भी कभी कभी हमारे को बता ही पाते हैं कि भाई हमने करके, जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि डॉक्टर लाड ने इतना, एंड दिस इज नॉट इन अ वीडियो, दिस इज समथिंग दैट आई नो, समबडी आस्क्ड हिम इन पर्सन एंड ही सेड कि दिस इज कैन लीड टू इंसैनिटी. तो जब ऐसा एक इनपुट आया तो देन वी हैव टू, इट बिकम्स इनकम्बेंट अपॉन अस टू एक्सप्लोर रादर डीपली. क्योंकि अगर हम, बात ये है कि हम अगर रिकमेंड करते हैं और वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर भाई लेफ्ट हैंड से करने में कोई हर्ज नहीं है और हम बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो भी वो अनफेयर है टू द स्टूडेंट. और यदि उसमें हर्ज है और हम उसको अगर स्टॉप नहीं करते हैं तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है ही है. सो विच इज व्हाई on this aspect it's important to explore a little bit more, so that we arrive at, क्योंकि ये मुद्रा का जो है, देखिए जैसे आपने कहा हाथ तो थक ही जाता है, so the temptation to use the left hand will be tremendous for every practitioner.
तो इसलिए ये हमको आई फील कि ये हमको थोड़ा सा एक और रीजनड एक एनालिसिस करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि व्हेन वी recommend to another person, we should be able to recommend confidently. हाँ, नहीं, one thing which I have understood is without any kind of जब तक हमको कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल जाता या कोई ऐसा रिसर्च नहीं मिल जाता या फिर कोई ऐसा कॉन्क्रीट रेफरेंस नहीं मिल जाता, हम ऐसे बोल ही नहीं पाते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। जबकि कई टेक्स्ट मिलेंगे आपको, सबके अंदर रेफरेंस राइट हैंड का ही दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड का ऐसा कोई रिसर्च भी नहीं। जबकि मैं ये जानता हूँ कि हमारे टीचर्स हमको हमेशा यही कहा करते थे कि अगर आप थक जाओ ना तो टेक अ ब्रेक एंड लेट द प्रैक्टिस बी टेकन, taking a break for some time and your hand and the shoulder is getting relaxed, and then you again start using your right hand only. It is better to avoid using the left hand because the left hand is not recommended, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, but never the reference of left hand you will see coming. So there is obviously a reason why the left hand should not be used, as you are saying, but that need to be find out, and I don't know. To be very frank, I don't know. Yeah. Okay. So last class we were doing the Surya Bhedan, and we came across the revelation that Surya Bhedan will help us to activate the Kundalini. It is going to improvise the Agni in the body, and at the same time it is said that this Surya Bhedan will lead to prevention of old age and even death. This is nothing but a very excellent practice of Surya Bhedan. हमने हठ प्रतिपिका में पढ़ा कपाल शोधनम, वात दोषग्नम, कृमि दोष हरण। वो चीजें यहाँ पर रिपीट तो नहीं हो रही हैं, but at the same time these are the things which are additional to it. So these additional things to that of Hatha Pratipika is like giving us more understanding about the practice of Surya Bhedan with respect to its benefits. And he goes on to say, O Chanda, I have explained to you about Surya Bhedan, which is an Uttam Pranayama. Now let us go ahead and try to understand what is Ujjayi. अभी उज्जयी भी जो है, हमने हठ प्रतिपिका में जिस तरह से उज्जयी को समझा, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि as you inhale and exhale, you have to inhale and exhale in such a manner as if you are creating a kind of pressure, as if you are creating a kind of what you call as experience in the throat to the chest. Hridayavadi saswanam means you should be feeling that pressure right from the throat to the chest region. That mark has been done in Hatha Pratipika. But in Gheranda Samhita, it has been told that we have to circulate that air in our oral cavity as we inhale and exhale. अब आप बोलेंगे कि how to circulate the air? This question was asked. तो टीचर का कहना क्या था कि for example, you take a mouthful of water and try to do gargling. And if you don't have any air in the lungs, you will not be able to gargle. So I was wondering whether that is true, and I practiced, and I really found that true. तो उसमें रीजन क्या होता है कि गार्गलिंग कैसे होती है कि हम जब मुंह में पानी रखकर ऊपर लेके गार्गलिंग करना शुरू करते हैं, तो the air which is there in the lungs, we are pushing it up, and that air is not allowing the water to enter into the food pipe, which eventually has, after subsequent length, the addition of the windpipe is also there. तो windpipe के पहले एक common region होता है pharynx का, जहां पर जो है windpipe और food pipe दोनों का ओपनिंग है,
और वहां से पानी जो है अंदर नहीं जाता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ग्रर करके गार्गलिंग करते हुए। तो व्हेन यू आर डूइंग द गार्गलिंग, यू आर एक्चुअली मेकिंग द एयर to push out, and that air is coming out with the bubbles in your opened mouth, and your water doesn't goes in and you spit it out. तो उन्होंने कहा कि while inhaling also you can restrict the entry, while exhaling also you can restrict the entry, either way, from outside to in or from inside to out. So this restriction of the entry of the air from outside to in and from inside to out is carried out by that epiglottis. Now, what is epiglottis? Epiglottis is just an aperture above the windpipe, which is just like a cap above the windpipe. जब हम इनहेल करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस खुलता है और हमारी हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ लंग्स में जाती है। जब हम एक्सेल करते हैं तब भी ये एपिग्लॉटिस खुलता है टू एक्सेल आउट, लेकिन इनहेलेशन और एक्सेलेशन के बीच में ये बंद होता है। जस्ट इमेजिन, दोनों के बीच में बड़ा फ्रैक्शनल सेकंड टू 2, मतलब 1 सेकंड का भी कुछ फ्रैक्शन, 1 से 2 फ्रैक्शन सेकंड जो है वो बंद होता होगा, खुलता होगा, बट इट क्लोजेस एंड ओपन्स अप। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एपिग्लॉटिस की जो एनाटॉमी है, एपिग्लॉटिस इज टू द लोअर साइड फ्रॉम द फेरिंग्स एंड फ्रॉम एटलीस्ट यू कैन से 2 सेंटीमीटर्स और मे बी 1 इंच के बाद में जो है ना एपिग्लॉटिस का रीजन आता है, जहां से आपका विंड पाइप शुरू होता है, और ये विंड पाइप के ऊपर कैप। और आप देखिए, जब आप अन्न खाते हैं तो जब आप उसको निगलते हैं, व्हेन यू गल्प इट, दिस रीजन इज इंजीनियर्ड इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर कि व्हाइल गल्पिंग द एपिग्लॉटिस क्लोजेस and the food goes directly into the stomach, नीचे की तरफ वो चला जाता है। जब आप पानी भी पीते हैं, the epiglottis closes because you are doing that gulping action. So when you do the gulping action, even if you are taking the air in, it will go to the stomach, it will not go to the lungs because the windpipe is closed with that epiglottis covering the entry. अब जब पार्शियल क्लोजर की बात आती है, तो वेदर यू आर इनहेलिंग और एक्सेलिंग, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द एयर इनसाइड और आउटसाइड, बिफोर गोइंग इन और बिफोर गोइंग आउट। अब ये पूरा कंसेप्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का समझने के बाद में, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द श्लोक रिटन बाय गिवन बाय घेरंड मुनि। ही सेज, नासाभ्याम वायुम आकृष्य मुखमध्ये च धारयेत्, हृद्गलाभ्याम समाकृष्य वायुं वक्त्रं च धारयेत्, मुखं प्रक्षाल्य संवन्द्य कुर्यात् जालंधरं, ततः आशक्ति कुंभकं कृत्वा धारयेद विरोधतः। Now he says, drawing in air through both the nostrils, you are retaining it inside the mouth, contracting the chest and the throat, and allowing the air to get circulated or move in the mouth itself or in the throat itself, and bending the neck, perform jalandhar bandha and retain the breath so long as one can do it with ease. अब ये इन्होंने पूरक की बात बता दी, और फिर उसके बाद में आगे जाके कुंभक कैसे करना है वो भी बता दिया। देन ही सेज, उज्जयी कुंभकम कृत्वा सर्व कार्याणि साधयेत्, न भवेत कफ रोगाश्च क्रूर वायुर अजीर्णकम, आमवतः आमवातः क्षयः कासो ज्वरः प्लीहा न विद्यते, जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जयी साधयेन् नरः। The practice of Ujjayi Kumbhaka accomplishes all things. There will be no disorder of phlegm, कफ के रोग कभी भी नहीं होंगे। Flatulence and indigestion, क्रूर वायु and अजीर्ण will be taken care of. Rheumatism
कंजम्पशन, कफ, लीवर, लीवर की स्पेलिंग रॉन्ग है, LIVER होना चाहिए, लीवर और एनलार्ज स्प्लीन प्रॉब्लम विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ. नाउ ए पर्सन शुड मास्टर उज्जयी टू गेट रिड ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ. अब ये ओल्ड एज एंड डेथ तो कॉमनली आपको हर प्राणायाम के बाद लिखा हुआ पता चलेगा. उसका रीजन तो आप जानते ही हैं, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास करने से द रेट ऑफ breaths in 1 minute reduces considerably to almost 1 to 2. At the most, in your and my case, it will be 4. But in Ujjayi, in the case of a very great practitioner, you will find that he is breathing only once because he is doing Purak, Kumbhak and Rechak, all the three. और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पूरक, कुंभक, रेचक अगर कभी वो 20, 80 और 40 करते हैं तो इट इज लाइक almost for 2 minutes they are taking to complete one cycle, because they are retaining the breath in and then they are exhaling it out. Of course, there is no mention about the holding of the breath out. वो एक अलग टॉपिक बन जाता है. अब हठ प्रदीपिका में जब हम देखते हैं तो यहां पर जो हमें बीमारियों के बारे में बताया गया है, इसमें 3-4 चीजें जो हैं, जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ फ्लेम, लीवर एंड एनलार्ज्ड स्प्लीन, ये बातें तो बताई गई है वहां पे. लेकिन वहां पर ग्लैंडुलर सिस्टम की बात की गई और खास करके जो है आपका थायराइड ग्लैंड वहां पर कंसिडरेशन में आ जाता है, क्योंकि इन योर थ्रोट रीजन यू हैव द थायराइड एंड द पैराथायराइड ग्लैंड्स. द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर आल्सो playing very important role in our metabolism as well as digestion of the calcium and getting it absorbed in the body. और ऐसे कहा गया है कि उज्जयी का अभ्यास करने से धातुगत दोष, मतलब धातुओं का जो दोष है, अब धातु यहां हमको 2 तरीके से समझना चाहिए. एक तो सप्त धातु और त्रिधातु यानी त्रिदोष है. जहां त्रिदोष की बात आ जाती है तो वात, पित्त, कफ तीनों आ गए, और जहां सप्त धातु की बात आती है तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ये सप्त धातु. अब वो क्या कहते हैं कि ये सप्त धातुओं का जो भी वीकनेस है या कॉम्प्रोमाइजिंग है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ एंड ट्रीटेड. नाउ यू गो ऑन अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग दैट थिंग इन योर माइंड रिलेटेड टू दैट सप्त धातु. When you talk about rasa, rasa is that part of our eatables जहां पे जो चीज शरीर को रिक्वायर्ड है वो जो निकलती है वही है, बाकी का सब चीज जो है निकाल दिया गया. एंड इट कम्स इनटू द चाइम, वी से CHYME in English, which comes into our blood circulation as nutrition for each and every cell, even for our brain. रक्त इज योर ब्लड, और ब्लड के अंदर हमको कई चीजों की जरूरत होती है. यू कैन इवन इमेजिन द आयरन, द कैल्शियम एंड द अदर रिक्वायरमेंट्स. मांस इज योर फ्लेश. मेद इज रिलेटेड टू द बोन मैरो. मेद इज आई एम सॉरी मेद इज फैट एंड मज्जा is related to that bone marrow. Asthi is the bone itself. And Shukra means that ultimate part which goes ahead and makes the Raja or the Shukra. So we can literally say that with the practice of Ujjayi, we can make our metabolism so great that if the weakness in the body is not allowing us to get along with that iron metabolism, calcium metabolism, or maybe any other mineral metabolism, with regular practice of Ujjayi, we are strengthening our digestive system to such a great level
that we are able to overcome those inadequacies and we are able to make the digestion of these important ingredients proper, so that they are not only utilized by the body but they are brought to the proper consumption. नहीं तो क्या होता है, जो इंसान बीमार होता है उसका अगर कभी यूरिन टेस्ट किया जाए, एग्जामिन किया जाए, स्टूल एग्जामिन किया जाए या फिर ब्लड एग्जामिन किया जाए, तो यू विल फाइंड दैट the evaluation, the diagnosis leading to the improper functioning of the systems and not allowing the digestion of these important things. And Ujjayi is that pranayam which leads you into that. इतना ही नहीं है, हमने हठ प्रतिपिका में तो ये भी पढ़ा कि Ujjayi is that pranayam which leads to the state of very calming mind. Now it is true that after doing Ujjayi, you are in such a kind of state of mind that you don't feel like opening your eyes. And you just want to be there experiencing the after effect of the practice of Ujjayi. And it becomes a state of mindfulness leading to a state of meditation itself. तो जैसे पतंजलि कहते हैं धारणा सुच योग्यता मनसा, धारणा सु का मतलब ही होता है धारणा ध्यान समाधि. So the practice of pranayam will lead you to that state of antaranga yoga. And this Ujjayi is one of the factors. And when we are told that you are going to that mindfulness state, the reason is the understanding of Nadanusandhan. Initially, you are producing that hissing sound because of the contraction of the throat region. But later on, what happens? You are not producing sound, but the sound is happening on its own. And that is something like, bringing a kind of what you call as equanimity in the functioning of all the systems, leading to this kind of state of experience. And that is where Ujjayi becomes a very important practice in pranayama, especially the Ashtakumbhaka. So see, this 66, 67, 68, making us understand okay, how, not 68, 68 is the other one now, it is Shitali. But here this Ujjayi pranayam is becoming clear to us okay, how we should be practicing. Now, if there is any doubt in your mind related to this explanation, please come on. Okay, so I think we should go ahead with the next one. Yes, so sir. The only thing is that the text mentions Ujjayi, not Ujjayi. Ujjayi. So Yeah, there is it no is difference Ujjayi. between Ujjayi and Ujjayi, no? But it is Ujjayi only. If I am saying Ujjayi. Ujjayi, it is wrong. It is Ujjayi. Ujjayi. Yeah, it is Ujjayi. You are right. Yeah. Going ahead now. जीवया वायुम आकृष्य च उदरे पूरयेत् शनैः क्षणं च कुंभकं कृत्वा नासाभ्याम रेचयेत् पुनः. Jivaya by tongue, making it rounded like a beak-like structure. You are inhaling air and filling the air into the lungs. यहां पर लिखा है कि च उदरे पुरये क्षणैः. But that doesn't mean that you are taking the air and taking it to the stomach. It literally means that you inhale and take it to where it is supposed to go, and that is your lungs only. Okay. And then shanam cha kumbhakam krutva nasabhyam rechayet punah. Having maintained there for a short time, exhale through both the nostrils. Nasabhyam. The nasabhyam word itself means the duality. So through both the nostrils, you are exhaling it out. Rechayet punah. If this is Shitali, how it is explained in the next. Sarvada sadhayed yogi Shitali kumbhakam shubham
ajirnam kafapittam cha naiva tasya prajayate. A yogi should always practice this Shitali Kumbhaka. He will never suffer from indigestion or disorders due to phlegm or bile. Now, this is the only explanation given here. But if you take up Hatha Pradipika, Sitkari is over-explained. Over-explained means it goes on to say that the person who is practicing Sitkari will become so attractive that all the yoginis will start circling around him. ये आप लोग जानते हैं, याद रखे होंगे इस बात को. तो इट इज सेड इन हठ प्रतिपिका. लेकिन उसके अंदर एक बात और की गई है जो शितकारी में भी कही गई है और शीतली में भी कही गई है, जो यहां पर नहीं है. और वो उसमें क्या लिखा हुआ है? न शुद्धा न त्रिषा नैवलस्यम प्रजायते. आलस्य इज टेकन केयर ऑफ. न शुद्धा न त्रिषा, न भूख लगती है न प्यास, और आलस्य आपका गायब हो जाता है. अब देखो, now some kind of understanding which is not given here to add, but ये जो बातें हैं indigestion or disorders due to the phlegm, they have been said in Hatha Pradipika also. But this fellow is not connecting to those things of Hatha Pradipika related to hunger, related to thirst, and related to overcoming the sloth. And this is where the regular practice of Shitali becomes very, very helpful. Yeah. But at the same time, since these are the traditional texts and there is no mention of contraindications, in Ujjayi, I don't see any contraindications as such. In fact, everybody should practice it. But when it comes to Shitali, inhaling air through the mouth itself is an understanding of unnatural mean. Air is always supposed to be taken in through the nose, and here we are told to take it through the mouth. Many great teachers have brought it into clarity that Shitali and Sitkari pranayam should not be done by the people who are having problems related to the oral cavity, maybe related to the root of the teeth or the tooth or the gums, जो हमारे मसोड़े की बीमारियां होती है, like pyorrhea and all. A person who is having those bleeding gums, they should avoid, they should not do this practice. And there are people who have a particular disease related to salivary glands, and you will find that their salivary glands have been swollen below the lingual, that is your sublingual glands, below the tongue, in the maxillary region, in the mandibular region. And these glands, because of some or the other issues, they are suffering, and they introduce that person to lot of cough related issues, or I should say lot of phlegmatic diseases or disorders. In that case also, one should not do Shitali Sitkari. Though Sitkari is not mentioned here, but Shitali should not be done. Again, if there is throat infection, catarrh, that means the redness or infection in the throat, tonsillitis, inflammation of the tonsils, we should not be doing the practice of Shitali. Yeah, when I talk about the throat region, we should not be doing Ujjayi also, because it may happen that we are aggravating the situation and experiencing the problem to a greater extent and level. So this is how we have understood the practice of Shitali Sitkar. Yeah. Any question there in your mind? Okay, fine. Coming to yes, ma'am. Most of the yoga schools are teaching these two pranayams, Shitali and Sitkari, and they don't mention, no caution is mentioned. Is it? But at the same time, it is mentioned in that Kaivalyadham,
In fact, if you see Kaivalyadhamji's book on pranayam, which is one of the oldest publications in relation to the practice, he first mentions the contraindications and all. And even the book written by Nimbalkarji, which is also named as a mental health through pranayam. The name of the book itself is like attaining mental health through pranayam. And in that, he clearly goes ahead and mentions about these two things related to the contraindications. Because this oral cavity is subjected to this kind of external impure air. First of all, we are always told by our teachers that pranayam should not be practiced in a polluted environment. But I always take the name of Dr. Agashe. What he used to say, this is really worth pondering upon. You have learned to live in this polluted environment. You have adapted with your body, your mind, and your system to this impure environment. So when you do pranayam also in this polluted environment, it is going to help you. It is not going to affect you. So he said that somewhere our system has developed that kind of immunity to the available problems, and we will be able to manage it properly. So he was scientifically very much correct, because we people, मैं तो क्या होता है मालूम है, ऐसा हम देखते हैं कि धारावी में जो रहने वाला इंसान है, अगर उसको लेके जाके माथेरान के अंदर 4 दिन के लिए रख दो तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन धारावी में आने के बाद में वो अच्छा हो जाएगा. The reason is because of the understanding of the climate, that of the very pure place, and that of the what you call as Dharavi region, which is very polluted class in our Mumbai region, as we say. So this kind of things can also happen. Now that depends upon your adaptability, how you are to that state. अब जैसे कि हमारी बेगम जो है ना, जब से हम शादी करके उसको लेके आए, गर्मी के अंदर उसको मुंबई के अंदर सर्दी हो जाती है, और जैसे ही वो अपने गांव चले जाती है जहां पर उसने अपनी जिंदगी बिताई हुई है, वहां पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ठीक हो जाती है. अब वो वहां अपने गांव में उतने साल नहीं रही जितने साल वो मेरे साथ में रह चुकी. हमारी शादी जल्दी होगी. व्हेन वी गॉट मैरिड शी वाज ओनली 17. तो अब वो मेरे साथ में शादी होकर 27-28 साल रह रही है वो, लेकिन फिर भी उसको वो प्रॉब्लम है. That still persists. So sometimes I even try to understand, okay, where is this problem connected to our system? And that is where the practice of pranayam becomes important, because pranayam plays that role where it makes you adapted to the place and the situation, and you will be able to overcome your issues related to immunity. So that is how we should understand the things and relate to it. Yes, but you are right. It is not mentioned in the textbook, but yoga schools do tell us about the contraindications which are supposed to be known before the practice of this, especially Shitali pranayam or Sitkari pranayam, which are especially done through the mouth. Not only this, but when we go for that practice of Plavini pranayam, in Plavini pranayam, first we have to inflate our abdomen like a balloon by eating air. Even that is not advised for a normal person like you and me. It is advised only for a regular practitioner of yoga and who has elevated himself to the level of practicing higher practices, that he should be keeping air in the stomach and then doing Pura, Kumbhak and Rechak with respect to the lungs. See, मतलब हवा पेट में भी भरनी है और फिर उसके ऊपर से फिर आपको लंग्स तक भी लाकर जो आपको करना है. खैर वो प्लाविनी हठ प्रदीपिका में है. That you will not come across here in the Gheranda Samhita. It has been completely removed from this Gheranda's sequence of the Ashtakumbha. Yeah. Any other thing, friends, related to this? Okay. Next, we are coming to Bhastrika, one of the very important practice. In Hatha Pradipika, if you go through the
Shloka, it is written that one should be giving the strokes like Bhastra, inhalation, exhalation, both active, unless one gets tired. The moment you feel that fatigue has come in, then you should be closing the left nostril, breathing in through the right, doing the kumbhaka, and exhaling through the left. That is written as Hatha Pradipika. But remember this line, कि you have to give inhalation, exhalation unless you become tired. लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ? यहां पर लिखा हुआ है कि you have to give only 20 strokes and do this. And one thing is very clear here, कि unless you do 20, 20, 20 वाले 3 strokes के साथ में 3 rounds, it will be one composite round of Bhastrika. Now let us try to understand this. Bhastrika लोहकाराणाम यथा क्रमेण संभ्रमेत तथा वायुं च नासाभ्याम उभाभ्याम चालयेत शनैः. As the bellows of the blacksmith is inflated again and again, similarly, steadily move the air in and out using both the nostrils. Okay, and now see the next one. Having done this, he says, एवं व्युंशति वारम चकृत्वा. ऐसा inhalation exhalation actively कितनी बार करना है आपको? व्युंशति means 20 times. He says कुर्यात् च कुंभकम. Then go ahead and do the kumbhaka. Tad ante chalayed vayum purva uktam cha yatha vidhi. The way it has been told to you earlier, you should be doing the kumbhaka and then exhale out in the manner as it has been said to you earlier. Trivaram sadayed enam bhastrika kumbhakam sudhihi na cha rogo na cha klesha arogyam cha dine dine. Now doing 20 times, performing the kumbhaka and then exhale in the manner as laid down. A wise man should perform this Bhastrika 3 times in one sitting. There will be no disease or suffering. Day by day he will gain in health. अब यहां पर देखो, ये जो श्लोक नंबर 72 है, वहां पर क्लेश को इन्होंने खाली सफरिंग बोल के रख दिया. That is true. Kleshas are nothing but miseries or afflictions or suffering. But one should always understand that klesha exists in 4 forms as per Yoga Sutra. Prasupta, Tanu, Vichhinna, Udara. अगर प्रसुप्त लेवल पे भी है, इसीलिए कहा जाता है, हठ प्रदीपिका में क्लियरली कहा गया कि even Brahmadeva, being there in the Devaloka, even he is regularly doing pranayam to make sure that he is not going to that kind of, state of deeds where he will be taken to the other yoni. So he wants to come back to the Manushya yoni and gain mukti rather than going to the other side. So pranayam is one of those sadhan which will ensure to come back to the Manushya yoni. So these efforts of pranayam are also appreciated by the devas. Now when it is said devas, who has gone to that loka and seen them doing the pranayam and all? मैं तो ऐसे ही बोलूंगा ना, मैं तो अज्ञानी हूं, उतना तो मुझे पता नहीं है. लेकिन एक बात इस लाइन से समझ में आती है कि however great saint you are, the kleshas are still there in you if you have taken birth as a body, manushya, and those kleshas are there in you as supta avastha. तो even that supta avastha klesh को अगर overcome करना है, तो you have to do the practice of pranayam. That is what I want to make you understand. So here, with this understanding, if the kleshas are in 4 forms, prasupta, tanu, vichhinna and udara,
We are in the Udara Sthiti where we are experiencing all kind of diseases, or Vichinna where we are experiencing all kind of mental disturbances. And Tanu, if the other two is not there, at least that bleak, very feeble state of klesha is still there in us, which makes us to sometimes become angry, sometimes frustrated, sometimes, still coming under the impact of the shadripus and getting faltered. और फिर हम लोग बोलते हैं अरे यार इंसान है, हम इंसान से गलती नहीं होगी तो और किससे होगी, मतलब गलती करने के लिए इंसान को गाली दे दी आपने। इसको अगर कभी आप समझने की कोशिश करो तो here that klesha can be taken care of with the practice of the beautiful pranayama. So here na cha rogo, जब रोग की बात की जाती है तो we have to understand व्याधि as आधीज व्याधि and अनाधीज व्याधि। अब ये जो कंसेप्ट है आधीज व्याधि और अनाधीज व्याधि का, it is in योग वाशिष्ठ in the explanation about the nirvana prakaran. So he says all the problems are adhij. What is adhi? धी का मतलब होता है बुद्धि। हम देखो गायत्री मंत्र के अंदर भी धीमहि धियो यो नः, है ना, धी का शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। अब वही धी को आधी कहा तो आधी इज अ स्टेट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द चित्त or the buddhi. Now that adhi is resulting in two types of vyadhis. One is sar adhija vyadhi and the second one is samanya adhija vyadhi. Now samanya adhija vyadhi is the day to day जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, सर्दी खांसी इन्फेक्शन ये वो फलाना बिस्तान, रोना धोना सब है, वो आपका सामान्य हो गया। लेकिन सार आधीज व्याधि क्या है? सार आधीज व्याधि इज दैट स्टेट ऑफ चित्त विच वी कैरी फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ एज आवर कार्मिक इंप्रेशन ऑफ द बैगेज, कर्माशय जिसको हम कहते हैं, विच इज द रीजन फॉर द बर्थ एंड डेथ, एंड दैट इज द व्याधि, दैट इज द सार आधीज व्याधि। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? न च रोगो। तो जब रोग की बात की गई तो जस्ट डोंट टेक इट एज अ कॉमन मैन्स प्रॉब्लम्स। इन फैक्ट दिस रोग कैन बी कनेक्टेड टू दैट रोग ऑल्सो। इसलिए हमारे वेद के अंदर कहा जाता है सबसे बड़ा तप अगर कोई है तो वो है प्राणायाम का। प्राणायामम परमम तपः। So this is how we are understanding the subject and going ahead. So here he says त्रिवारं साधयेद एनम भस्त्रिका कुंभकम सुधिहि न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। So day by day you will gain health. Which kind of health? जो हमारा हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है स्वस्थ, स्व में स्थित होने वाला health. So that is how we have to connect with it and go ahead. Going ahead, now we are coming to a very different kind of explanation related to भ्रामरी। भ्रमर की आवाज, भ्रामरी। अब हमने हठ प्रतिपिका में भ्रामरी के बारे में क्या पढ़ा? उन्होंने लिखा वेगाद घोषम पूरकम, और फिर आगे क्या बोलते हैं? भृंगनादम, यानी ये मेल हमर बी साउंड। वेगाद घोषम यानी rapidly you have to inhale, producing that sound of bhrung, male hummerbee, and say bhrungi nadam mandam mandam rechakam, producing that hummerbee sound. Do the rechaka slowly, slowly, gradually. Okay, now these two things said and understood हम उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने पिछले हठ प्रतिपिका की क्लास में भ्रमरी के हमने ये क्लैरिटी ले आई कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनहेलेशन वाला साउंड मेल हमरबी का होता है और एक्सहेलेशन वाला साउंड फीमेल हमरबी का होता है। फर्क यही है कि दोनों में जो है पंख की आवाज ही साउंड लाती है
बट जब हम करते हैं, जब आप और मैं ये प्रैक्टिस करते हैं, तो पूरक की आवाज करके आती है और रेचक की आवाज करके आती है। तो ये इनहेलेशन, ये एक्सलेशन, ये दोनों में जो फर्क है उसको समझाने का एक तरीका है कि भृंगनादम एंड भृंगीनाद। तो पूरकम, रेचकम। लेकिन यहां पर देखो, घेरंड संहिता में घेरंड मुनि का जो एक्सप्लेनेशन, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ही सेज सम वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो बोलते हैं रात के अंधेरे में बाहर निकलो, ऐसी जगह ढूंढो जहां पर कीड़े मकोड़े, बारिश के कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, टिर्र करके आवाज आती, क्रिकेट साउंड। वो बोलते हैं कि ऐसा भी साउंड नहीं होना चाहिए, और ऐसे शांत वातावरण में अपने कानों को बंद कर दो, और जब कानों को बंद करोगे तो तुमको अंदर से आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज की ध्वनि पर पूरी तरह से जब आप मन को केंद्रित करके अभ्यास करते हो, दैट इज भ्रामरी। तो ये भी एक प्रकार का नादानुसंधान का अभ्यास है। नाउ सी हियर व्हाट ही सेज, अर्धरात्रे यानी आधी रात को, जैसे हॉरर फिल्म की स्टोरी बता रहे हो, हाँ? गते योगी जंतु नाम, हाँ? शब्द वर्जिते कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम कुर्यात पूरकम कुंभकम। When it is midnight, in a place where there are no sounds of any living creatures as such, let the yogi practice Puraka and Kumbhaka, closing the ears by the hands. अब यहां पर पूरक एंड रेचक, मतलब आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर कोई साउंड निकालने के लिए नहीं कहा है। जस्ट be in a place where there is no sound of any living creature, etc. And then you perform the Purak and Rechak. That means you do the inhalation and exhalation as you are supposed to do. And see in the next, the 74th shloka, he says, Shrunayat Dakshine, from the right ear, Shrunayat Dakshine Karne, Nadam Antargatam Shubham, Prathamam Jhillika Nadam, वंशी नादम ततः परम। फिर आगे ऐसे कई साउंड्स के नाम दे दिए, मेघ झरझर भ्रमरी, घंटा कास्यम तथा परम, तुरी भेरी मृदंग आदिनी नादान नाद अनेक दुंदुभिः। Now see, he should listen by the right ear and welcome the internally aroused sounds. Internally aroused sounds. It is not at all the external ones. And what are those sounds? The sound of the cricket, the flute, the thunder, the cymbals, the big bee, the bell going trumpet, one-sided drum. वो on-sided लिखा हुआ है, उसको one कर दीजिए. Double-sided drum, in that order. Bheri, mridanga. So now see, if you go through this kind of explanation, this is nothing but a very clear understanding कि you do Purak and Rechak in that silent region to such a great extent that you develop such a kind of internalization where you are able to hear the sounds from within. अब यहाँ पर तो कोई इंसेक्ट का नाम ले लिया, कोई पंछी का नाम ले लिया, तो कोई वाद का नाम ले लिया, सबके नाम लेते हुए जो है हमको साउंड का डिस्क्रिप्शन कर दिया। बट व्हाट डज दिस मीन? As Hatha Pratipika says, initially, because this we have learned in the Nadanusandhanka practice, where it is said that initially when you are starting with the practice, you will hear lot of disturbing sound or chaotic sound, and you should not get deterred. Now what does this mean that you will be hearing chaotic sound? Initially we are all disturbed with the state of mind, na? So internally when we are giving vent to them, that venting of those, what you can say, impressions from our chitta, you will be
coming across the experience of a chaotic type of sound. But as those are vented out, you will be coming across and experiencing the eventual one, which is very minute and very much peaceful. Peaceful like that of sound of veena. See the next shloka. Evam nana vidho nado jayate nityam abhyasat anahatasya. Anahata means not the ahat nada. Anahata nada he is talking about. Anahatasya shabdasya tasya shabdasya yo dhvanihi. You will find that you are able to hear that kind of sound which is not produced by striking or striking of the two objects. And see in the next one also. Dhvaner antargatam jyotir jyotir antargatam manaha tanmano vilayam yati tad vishnoho parampadam evam brahmari samsiddhi samadhi siddhim apnuya. He is ready to tell us that samadhi is that, brahmari is that practice which will eventually lead us into the state of samadhi itself. So various sounds are heard in the daily practice. The resonance of the internally aroused sound, which is blended, spelling is wrong there, correct it, which is blended with the internally aroused light, and the manas, that means the chitta merging in that. That mana is disappearing, as I was telling you earlier. You will find that the whole chitta is getting purified and giving vent out to all the impressions. Then remains Vishnu. Now, what is this Vishnu here? Here, Vishnu too is to be understood with that state of sattva, wherein your mind is becoming very clear and very pure, which is the ultimate aim. Now, that is the ultimate aim. And the object, the yogi's quest. What is the yogi's quest? What is that object? Knowing the truth, gaining that acquaintance with Brahman, with Purusha, with the self. By mastering Brahmari in this way, you will be succeeding in a samadhi itself, he says. So Brahmari becomes one of the practice of samadhi. और यही बात जो है उन्होंने 7th चैप्टर के अंदर दोहराई है, लेकिन 7th चैप्टर के अंदर उन्होंने इतना डिटेल टेक्निक नहीं दिया. जो टेक्निक यहां पर हमने देखा, राइट फ्रॉम द श्लोक नंबर 73 to 74, 75, 76, 77, all this, the 5 to 6 shlokas that we have read just now, they are all very helpful for us to understand the state of samadhi by doing the regular practice. Now, many people have a different way of closing the ears. That is to be brought here. अब देखो घेरंड मुनि ने कहा जरूर है कि आपको कान बंद करने, लेकिन many people, you know, some schools they come across and they say, अगर कान बंद करने तो सिर्फ कान ही क्यों, आंख, नाक, मुंह, सारे इंद्रियों को हम अंदर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं. Nothing wrong, do it. प्रत्याहार का प्रैक्टिस है, तो उसको हम कहते हैं षण्मुखी मुद्रा. But there are certain schools, they say only insert your index finger and close your ears and practice. Bihar School of Yoga, they will not go for षण्मुखी मुद्रा, they will just tell you to those. और फिर कुछ स्कूल ऐसे हैं, वो कान तो बंद करते हैं, ये 4 उंगलियों को अलग अलग सेंसस पे नहीं रखते, खाली आंखों पर रख देते हैं. So however you do, it is up to you, it is your prerogative. Some people have this also. Nicely pointed out, very good. I have seen that also. यहां से अंगूठे से कान को बंद किया और ये 4 उंगलियां जो है सर पे रख देते हैं. All this is there. पहले जब मैं नया स्टूडेंट था ना, तो हाँ, yes ma'am. Is there something correct which is to be done? What is correct, or everything is okay? For me, everything is okay. If you ask me personally, Okay. but Guruji used to say, when we are told to close our ears, are we told to take our hands and close the ears? He used to say that. कि तुम श्लोक के अंदर वो देखो कि are we told to take our hands to the ears and close it,
No such mention is there. So with the closing of the years, you should connect it to Hatha Pradipika. In Hatha Pradipika, there is no closing of years as such. And you are supposed to do the humming sound by completely taking your mind diverted inside, and you are into that state of pratyahara. See, this is a gesture. This is a mudra, no doubt about it. But this gesture can be done without that kind of action. So it's basically an internalization. It is internalization only. Whether you this way, or any way, or this way, it is the different interpretations of different people, how they come out with that kind of explanation and made us to understand. But see how the great teachers used to understand it. They say, you do it, nothing wrong with that. You yourself will eventually realize there is nothing in closing the ears. Eventually your hands will come down and you will practicing, and you will find that your ears are closed. And that is true, na? See, when we become more and more internalized, where are we connected with anything happening around us? Even whatever kind of crackers are bursted around us, we will not be getting disturbed when we are totally internalized. Nothing will disturb. Only when our impressions are there in the chitta, which are connecting to the external stimulants, we will be always coming out to have an access to them. So this is how we have to understand it. So correct method, it is like a question mark. आपको कौन सा अच्छा लगता है वो करो, पहले कम से कम ये तो बहुत बड़ी बात है. Now since we all are sincere yoga practitioners, so I won't comment this here, but when it comes to the other practitioners, I tell them, पहले आके एक आधा घंटा मैट के ऊपर बैठकर प्रैक्टिस तो करो. तुम कैसे करते हो ये बात की बात, पहले वो मैट के ऊपर आकर बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. नोइंग मोर अबाउट द साइंटिफिक एस्पेक्ट और कैसे करना चाहिए, क्या करना, ये सब की बातें. इनफैक्ट दिस थिंग्स विल मटेरियलाइज एज यू प्रोग्रेस इन द साधना. दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू हैव इन योर माइंड टू? या चलो, लेट अस गो अहेड नाउ. Coming to the 78th, now we are talking about Murcha Pranayam. And remember, even Murcha is one of the practice of Ashtakumbhaka according to Gheranda Muni, which leads to the state of Samadhi. So Brahmari was one, and this is the another one. See, Sukhena Kumbhakam Krutva Manascha Bhruvor Antaram Santajya विषयान सर्वान मनोमूर्छा सुखप्रदा आत्मनि मनसो योगाद आनंदो जायते ध्रुवम. By performing a kumbhaka comfortably, fixing the mind between the eyebrows inside and detaching oneself from all the objects, there arises enjoyable tranquility of the mind. And when the mind is joined with Atman, verily there results the bliss. अब देखो, यहां पर टेक्निक के अंदर कहीं भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि यू अप्लाई चिन लॉक एंड विद दैट चिन लॉक मेंटेन्ड यू डू द एक्सलेशन, दैट इज रेचक. जबकि हमने हठ प्रतिपिका में यह पढ़ा था कि यू डू पूरक, यू अप्लाई चिन लॉक, एब्डोमिनल लॉक एंड डू कुंभक. But while doing the rechaka, do not release the chin lock. Do the rechaka and let the udyan bandh get released. That was understood out of the practice of Hatha Pradipika. But here he just brings the understanding by focusing in between the eyebrows. And he says that itself is Murcha Pranayam. So see, I am reading it again. This kumbhaka is performed comfortably by fixing the mind between the eyebrows inside and detaching oneself from all the objects. There arises enjoyable tranquility of the mind. When the mind is joined with Atman, verily there results the bliss. That now this last statement wherein it says Atmani manaso yoga anando jayate dhruvam, this statement is related to the state of Samadhi only, where you are getting connected with your Atman, where the Mana and Atman, they have become one. Mana means your Chitta,
where chitta is completely getting connected to the self and it is absorbed in the self. Or you can say, thereby you are revealing yourself. And that revelation is itself the state of Ananda, the great bliss, you can say. Now, this is something related to Murcha. Now, see, throughout the day, जो हठ प्रतिपिका में प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले जो एक्सप्लेन किया गया था कि जिंदगी भर हम श्वास लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। 1 मिनट में अगर 15 लिए तो 24 घंटे में पूरे मिला के 21,600 सांसें होती हैं। और ये 21,600 सांसें जो हैं, अगर हमने पूरी तरह से उस पर रिफ्लेक्ट किया, that itself becomes a state of awareness, and you will find that your breathing has been slowed down considerably, and you may reduce the number of the breaths which is being done throughout the day. Now see how Gheranda Muni has his own way of explaining this beautiful understanding related to our life. He says, Hankarena bahiryati sakarena vishet punah. Sahakarena. Now ha and sa means inhaling you are mentally chanting so, and exhaling you are chanting hum. Hankarena bahiryati. जब आप एक्सेल करते हैं तो आपको क्या करना है? हम. Sakaryena, you have to do vishet punah. Now see, shat shatani diva ratro सहस्त्र अन्य कविंशति अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा. उन्होंने तो बाकायदा नंबर दे दिया. षट शतानी यानी 600, दिवा रात्रो यानी दिन और रात, दिवा यानी दिन और रात्र यानी रात, सहस्त्र अन्येक विंशति, सहस्त्रान्येक एक विंशति यानी 21,600 पूरा बता दिया उन्होंने वहां पे. अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा. You are not aware of it, and that is why you are involved in your karmas. But the moment you become aware of it, it is like you are doing Gayatri Japa with that Soham. That itself becomes a Gayatri for you. And this he says as Ajapa Gayatri. Ajapa का मतलब क्या? जिसका आप जप नहीं करते हो ऐसा जप, जो अपने आप चलता रहता है वो जप. तो जो अपने आप चलता रहता है वो जप हमको जप करते रहना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं अजपा जप. तो अजपा जप जब होने लगे तो ऐसा कहते हैं कि सोहम अपने आप होने लगता है, एंड यू आर इन्वॉल्व इन दैट 21,600 टाइम्स इन अ डे. अब वो किस चीज से इसको रिलेट कर रहे हैं आगे देखो. मूलाधारे यथा हंस तथा ही हृदय पंकजे तथा नासापुट द्वंद्वे त्रिभि हंस समागमः. Now he is talking about the Hansa in the Mooladhara region. Now this Hansa is nothing but the state of Atma in the form of Kundalini based in the Mooladhara. That is Shakti. हंस हमारे उपनिषदों में कई बार आत्मा का जो कनेक्शन है ना, जब बताने का जब तरीका आता है तो आत्मा को हंस के साथ में रिलेट कर दिया जाता है. एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो. There is Hansa in the Mooladhara as in the heart lotus chest as in the 2 nostrils. तो 3 जगह पर बता दी कि ये जो शक्ति जो है मूलाधार से लेके भ्रू मध्य तक जो है एग्जिस्ट करती रहती है, अप एंड डाउन होता रहता है. और यहां पर ऐसा स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने हमको एक ही समझाने की कोशिश की है कि ऑल द प्राण मीन्स प्राण, समान, अपान, व्यान and udana, they are getting into their functional abilities and carrying out their own functions throughout the day and night in that ajapa gayatri. They are doing their duty. And then what he says, shanavatti anguli manam shariram karma rupakam. अब वो हमको ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि
एक प्रकार का मेजरमेंट दे दिया उन्होंने कि किस तरह से आपके कर्म असाइंड है और किस तरह से आपका जीवन व्यतीत होता रहता है. द वे यू स्पेंड योर होल लाइफ एंड से देह देह देहाद बहिर्गतो वायु स्वभावात द्वादश अंगुली. अब वो हमको क्या बता रहे हैं कि द बॉडी अकॉर्डिंग टू आवर कर्म, जो हमारे पिछले कर्म है, जो चित्त के अंदर लेटेंट इंप्रेशन के समान होते हुए हमको दूसरा जन्म मिलता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, तो उसका मेजरमेंट क्या है. उन्होंने कहा क्षणवत्य अंगुलीमाणम शरीरम कर्म रूपकम. ये 96 टाइम द ब्रेथ ऑफ वंस ओन फिंगर. अब देखो, मैं अगर कभी ये 4 उंगली ऐसे रखूंगा ना, तो ये हो गया 4 उंगल. ऐसे अगर कभी मैं पूरा मेजरमेंट करूंगा तो यकीन मानो आपका बॉडी आपको मेजरमेंट में 96 डिजिट्स दिखेगा. तो आपकी हाइट क्या है और आपके उंगलियों के ब्रेथ क्या है. भले आपकी हाइट 6 फुट की होगी, उसी प्रकार आपके उंगलियों का ब्रेथ भी होगा, और वो उंगलियों के ब्रेथ के ऊपर 96 डिजिट्स में पूरे बॉडी का लेंथ आप मेजर कर सकते हो. तो ये 96 डिजिट्स जो उन्होंने हमको बताए, ये हमारे कर्मों के आधार पर हमको ऐसा शरीर प्राप्त होता है. अब ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये इस जन्म में भोगने वाले हर कर्म से, वो सिचुएशन से रिलेटेड हर कर्म को रिलेटेड चीज को जो है आपको 96 डिजिट्स के अंदर बता दिया गया कि यू आर हैविंग दैट बॉडी विच इज अकॉर्डिंग टू दिस 96 डिजिट्स ऑफ योर ओन हैंड. अब आगे क्या बोलते हैं वो. ही सेज देहाद बहिर्गतो वायु स्वभाव द्वादश अंगुली ही. When you expel the breath, the normal breath, it ordinarily reaches out to 12 digits. और उसको यहां पर हमारे explanation में ऐसे लिखा हुआ है कि it is 9 inches. But let us not go to 9 inches. The 9 inches is the modern days measurement. What we will do, we will keep it अंगुली, because अंगुली को जब उन्होंने बॉडी को मेजर किया तो हमको ब्रेथ का एक्सलेशन भी हमको अंगुली से ही मेजर करना चाहिए. Why unnecessarily we go in? Because inches is the fixed measurement, but when it come to anguli, it will differ from person to person. So this clarity should be there. अब आगे देखो, गायने षोडश अंगुल्यो भोजने विंशति तथा. गायने, अगर इंसान गाता है तो उसका एक्सलेशन कहां तक जाता है. षोडश अंगुल्यो यानी 16 अंगुली. भोजने, जब खाना खा लेता है तो उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है हजम करने के लिए, तो वो कहां तक जाती है एक्सलेशन. विंशति. फिर आगे क्या बोलते हैं. चतुर्विंश अंगुली पंथे निद्रायाम त्रिंशद अंगुली ही. पंथे मीन्स व्हाट. व्हेन यू गो फॉर वॉकिंग, तो जब वॉकिंग के लिए जाते हैं तो उन्होंने कहा चतुर्विंश मतलब 24, 24. आशुतोष सर विल करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग एनीवेयर रॉन्ग. मैं शायद गलत भी हो सकता हूं. अब ये पढ़ा के मैं याद तो कर लिया हूं, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट अ संस्कृत स्टूडेंट, सो प्लीज हेल्प मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर. So no, you're right. You're right. Yeah, thank you. So 24 anguli as you are walking, and nidrayam त्रिंशद अंगुली यानी 30. Sorry, not 30. त्रिंशद means 13 or त्रिंशद is 30. Sir, what is your opinion? 30. But if you see in that explanation, there it is written wrong. It is written 13. Yeah, right. So correct that. That is 30 Yeah. now. Okay. So done. Now आगे क्या कहते हैं. मैथुने षट त्रिंशद उक्तम. मैथुने means while having sex, it is षट त्रिंशद means 36. व्यायामे च ततो अधिकम, and when you are exercising, it may be going still further. अब मुझे आप एक बात बताओ. What kind of reflection is this? हमारे जीवन के हर एक हरकत को उन्होंने हमारे सांसों के साथ तुलना करते हुए
हमारे अंगुलियों के मेजरमेंट में जोड़ दिया। इतना ही नहीं है, वो हमको एक एहसास भी कराना चाह रहे हैं। वो एहसास कौन सा है? वो कहते हैं नॉर्मल इंसान जब एक्सपेलेशन करता है ब्रेथ का, तो कितना है वो? खाली 12 डिजिट्स। लेकिन बाकी के सारे एक्टिविटीज में जब वो लग जाता है तो कहीं पर 12 से ज्यादा है, हाँ? कम तो कहीं भी नहीं है, ज्यादा ही है। तो अगर कभी हम वो 96 डिजिट वाला शरीर लेकर उतने ब्रेथ्स जीने के लिए अगर हम आए हैं, अकॉर्डिंग टू द 12 of the digits length. Now you tell me, friends, we are living in that stress. We are living in that bhagdod. We are living in that kind of lifestyle which has been mentioned here. कभी गाते हैं, कभी खाते हैं, कभी पीते हैं, कभी सोते हैं। सारी बातों को उन्होंने हमारे सामने रखकर वो मेजरमेंट में डाल के हमारे सामने रख दिया और हमको ये बताना चाह रहे हैं कि पूरी जिंदगी तुम अपना जीवन ऐसे बिता देते हो। अब आगे वो क्या बोलते हैं? सी द 86th वन। स्वभावे अस्य गतेर्यून परमायुः प्रवर्धते आयुः शयो अधिके प्रोक्तो मारुते च अंतराद अंतराद गते। तो च अंतराद गते, इट इज लाइक you are shortening your life if you are getting involved into the various activities which I am telling you. He says, as the natural range of the expired air is decreasing, life is prolonged. मतलब वो 12 से अगर कभी तुमने 9 किया, 8 किया, तो what is happening? The length of the breath from the nose as you exhale, maybe ultimately you will be experiencing only up to the tip of your upper lip, or maybe only up to the entrance of the nostril only. तो आप सोचो कौन से स्टेट में हैं आप। लेकिन वो 12 डिजिट्स यहां तक आएगा, तो वो 12 डिजिट्स को आपको क्या करना है? कम कम करना है। तो क्या होगा? आपकी लाइफ लंबी हो जाएगी। स्वभावे अस्य गतेर्यून परम आयुः प्रवर्धते। सो योर लाइफ इज गेटिंग प्रोलॉन्ग। आगे क्या बोलते हैं? इफ द लेंथ ऑफ द रेंज इज इंक्रीजिंग, दे से द लाइफ इज गेटिंग शॉर्टन। और हम चिंता के अंदर अपने ब्रेथ्स को लंबा करते जाते हैं, भागम दौड़ी में हमारे ब्रेथ को लंबा करते जाते हैं। वेरियस एक्शंस ऑफ अवर लाइफ, उन्होंने कहा ना, भोजने मतलब खाना खाते हुए भी हम अपने ब्रेथ को लंबा करते हैं। तो खाना खाना इज लाइक रिड्यूसिंग द लाइफ। तो उतना खाना कि भाई हमारी सांसें 12 डिजिट तक ही मिनिमम रहे, ताकि हम उतना तो जी पाए। लेकिन उतना खा लेते, बाप रे ज्यादा खा लिया आज, ऐसी हालत हो जाती है और सांसें लंबी हो जाती हैं हमारी। एंड देन ही सेज, तस्मात् प्राणे स्थिते देहे मरणम नैव जायते वायुना घट संबते भवेत केवल कुंभक। I will stop here now because I want to explain Kevala Kumbhaka in the next class. Because Kevala Kumbhaka will all again take lot of time, and we need to understand with respect to this kind of lifestyle we are leading. He literally says कि केवल कुंभक जो है ना, ये जो पिछले 6-7 प्राणायाम आपको बताए गए कुंभक, उसका रिजल्ट है। क्योंकि क्या होता है जब हम वो 6-7 प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हमारा भूख के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, प्यास के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, हमारी हरकतों पर कंट्रोल आ जाता है, हमारी आकांक्षाओं पर, हमारे वांट्स एंड नीड्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल यानी पता नहीं, हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता। और जहां वो इंटरेस्ट खत्म, आपकी ब्रीदिंग स्लो होती जाती है। और वो केवल कुंभक में हमको एक बात बताते हैं कि आपकी ब्रीदिंग ऐसी हो जाती है कि मानो जैसे आप ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे हो। एंड वंस द ब्रीदिंग स्टॉप्स and you do not realize whether it has stopped in or whether it has stopped out, it is kevali. That we will understand with the respect to the shlokas in the next class, friends, because again it is going to take at least 20 minutes to half an hour to explain that kevali and connect it with that what we have learned in hata pradipika. क्योंकि हठ प्रतिपिका में तो क्लियर डेफिनेशन है, जहां पर पूरक और रेचक ना हो ऐसा कुंभक केवली है। और आप बताइए, बिना पूरक और रेचक के तो हमारा कुंभक होता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा कुंभक होगा जो बिना पूरक और रेचक के होगा?
वो पूरक रेचक कुंभक या पूरक कुंभक रेचक करते करते वो लेवल पर हम आएंगे जहां पर वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, एंड दैट इज केवली. So here we will stop. Thank you very much. If there is anything in your mind, please ask. But this is a very beautiful way of explanation that has been given to us by Gheranda Muni, making us understand that how we are stuck in our lifestyle and we are depriving ourselves with the understanding of the truth. We are depriving ourselves knowing the truth. Okay. So there is nothing. Then we will wind up the session and go ahead with some sharings that we have with us. So requesting you all to kindly sit erect with your back. Just close your eyes. Observe your breathing. Slowly inhale. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gently open your eyes. यहाँ घेरंड मुनि हमको प्राणायाम करके कंट्रोल लाने के लिए बोल रहे हैं, और हमारी बेगम आज किचन के अंदर पूरन पोली बना रही है, तो वो पूरन की खुशबू से ही हमारी खोपड़ी खराब हुई जा रही है. नाउ यू जस्ट इमेजिन कब आएगा वो दिन जब हमारे सेंसस इतने इंटरनलाइज्ड हो जाएंगे कि हम बिल्कुल विचलित ना होंगे. वैसे बहुत एक्सटेंड तक जो है ना वो हिसाब किताब आ गया है कि नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड विद द डिस्टर्बेंसेस, बट स्टिल कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपके अंदर जो लेटेंट इंप्रेशन को ना ऐसा स्टिमुलेट करके इंस्टिगेट कर देती है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू ब्रिंग कंट्रोल अपॉन. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर. Yes, any sharing to be done, please go ahead.